all the respected dignitaries in the auditorium, my dear colleagues from various institutions. Such a pleasure to see you here, and thank you for having accepted our invitation and come all the way in spite of the weather and the conditions. This session will shed light on the topic exploring opportunities for research, funding, collaborations, incubation ideas, along with skill-based courses, value education, and vocational courses. And for this session, we have the following scholars: Dr. Kinnary Thakkar, Professor, Department of Commerce, University of Mumbai; Professor Mandar Bhanushe, Head, Faculty of Science and Technology, Institute of Distant and Open Learning, University of Mumbai; and Mr. Abhishek, who will be joining online, the Head of Planning and Monitoring Unit, Vocational Branch, Delhi. So I request Professor, thanks. Please excuse me. He thinks I'm too short for the auditorium. It's all right, just in jest. So, Professor CMA Dr. Kinnary V. Thakkar, I request you to please come over the dais. Yeah, you're already there. Thank you, ma'am. Please have a seat. Dr. CMA Dr. Kinnary Thakkar will be felicitated by our Honorable Trustee, Ms. Satish Pradhan. Ma'am, please. I also request Mansi Madam to please felicitate Professor Mandar Bhanushe. Thank you, Mansi ma'am. Let me introduce the expert, CMA Dr. Kinnary Thakkar. She is a professor from the Department of Commerce, University of Mumbai. Ma'am, please have a seat. This is going to be a bit long. She has an MBA in Finance, Cost and Management Accountant, Company Secretary, and is a gold medalist from the University of Mumbai. She has 24 years of teaching experience and is a recipient of many eminent awards. She has been granted 5 patents, and 2 of them are published. She has authored many vital books and organized several academic programs. 5 of her students have been awarded the PhD degree from under her guidance, and 11 MPhil students. She has 5 more students currently pursuing PhD under her. She has presented 74 papers in international and national level conferences and seminars and published 55 papers. She has been nominated as member on the editorial board review committee of 10 reputed journals and nominated as a reviewer's task panel member of the Intellect-Based International Consortium, USA. She has been a chairperson for 50 conference, seminars, and resource person of 200 workshops and webinars. And it's a privilege to have you, ma'am, with us, indeed. I actually have tried to make it brief because the CV ran into many pages. Please excuse me if I have missed out anything important. Ma'am, over to you. Good afternoon to everyone. And I'll directly start with the topic. Basically, I am here to discuss about the National Institutional Ranking Framework, that is the NIRF, and how you know that there will be changes which will be seen in the NIRF due to the implementation of new education policy. Basically, presently, so for that I thought I need to show you that presently what is the framework of ranking for these institutions, and just go to the parameters. Next. So these are the broad parameters where you have teaching learning resources, which has been given 30% of weightage, research and professional practice, that is also 30% weightage, graduation outcomes, outreach and inclusivity, and perception.
Now, while ranking all the institutions, there are again discipline-specific institutions, and there's an overall ranking. In overall ranking, you are considering these parameters, and in discipline-specific ranking, you are considering basically focusing on only one discipline like engineering, pharmacy, medical, management. You are not considering the parameters where you can have other, the parameters for discipline specific are again altogether different. So, in all, there are so many disciplines, and for every discipline and overall ranking there are various parameters. Now here when you try to observe the present framework, there are certain parameters which are common. Now everybody has undergone the process of NAAC and NIRF. NAAC is very common, and all the teachers here present, they all know that what is the criterion for, what are the criteria for which are there existing in the NAAC accreditation. In the coming years, in the ensuing years, NAAC, NBA and NIRF, there will be an integration, because more or less the parameters are same. But there are certain very visibly and very obvious parameters which are missing in NIRF. For example, if you talk about perception, NIRF is focusing on two different parameters under the perception, that is peer perception and employer perception. And when they go for finding out rating, weighing the employer perception, the employer perception data is populated from various sources. It is not been collected from the institution. In our NAAC accreditation, like student survey, the student survey, directly you are doing it, and then the information is gathered. In the same, almost similar to that, the data from the employer is collected, and on the basis of that data, the perception weightage is given, which at times gives an informed kind of answer. So that is something which needs to be revisited. And I think when NEP is implemented, in addition to this, there will be 2 more parameters which need to be included here in perception, is the perception of the students. That is the most important thing when you are considering perception. Presently only employer and peer perception is included, but students' perception is the most important part, and that is what will be should be included here. So in future, when all these 3 ranking agencies will be integrated, every parameter will be revisited, needs to be revisited, and what all shortcomings you observe in certain parameters, those shortcomings you have to do away with, and then you have to come out with such a comprehensive way of evaluation. In NIRF presently, while evaluating flexible, like short-term courses, just the previous speaker was talking about the short-term courses. Now at present what we are doing is short-term courses is something in addition to our main courses which we are offering. Okay, so when we are ranking that and when we are considering it as a part of our ranking, it is considered as an additional thing. But NEP gives equal importance. So now your short-term courses ranking, skill level courses ranking, that has to be brought in the mainstream. So you cannot have the same parameters at present which is there existing. You cannot have the same parameters in the same weightage while post implementation of NEP. So there are some points which where this modification or revised parameter and addition deduction needs to be required, and that is what I am discussing. One is at peer this perception, second is in the first parameter is teaching learning. In teaching learning, presently, flexibility is again not considered as an important parameter while ranking. But NEP is what? Focusing on flexibility, multiple exit entry. So again we cannot have the same weightage what is there in the existing system. So that also weightage of skilled courses which was to be brought, which is now to be important to be considered as a part of mainstream, and weightage for flexibility which is
the most important, the heart of the new education policy, these parameters needs to be revisited while framing the ranking framework for institutions. Second thing, at present in NIRF, if the strength of the institution is less than 1,000, they become out of the ranking framework. So that also, now if you are insisting on degree granting autonomous colleges and so many new changes you want to implement, then that also I think criteria which is existing right now, which is making many of the institutions, as sir said, in Goa University, you know, the college is the strength of the college is very less. So almost all the universities, all the colleges will be out of this ranking framework because so many institutions will not be able to meet the eligibility criteria. So if you, want the education and you want to change the institutional framework, the ranking, the way in which the institutional is being ranked, then this criteria also needs to be revisited. So basically what I was trying to implement is a holistic approach needs to be adopted for implementation, for ranking of institution post implementation of NEP. And more or less there are so many parameters which are very common, but there in that also, after implementation of NEP, these parameters also, weightage should be changed because flexibility, you know, you can offer the courses which are offered by other colleges. You have the flexibility of moving to that. So you are in this college, but you can still take some courses which are there in other colleges in the concerned, within the areas, within the radius of that concerned university. So that kind of flexibility and moving around, that parameter of ranking is not included at present in our framework. So with the change implementation in NEP, all these majority of the parameters which has weightage, that needs to be changed. The only parameter which may not foresee lot of modification will be research and professional practice, because NAAC, NBA and NIRF, all the three are giving the same importance and the same weightage, and all the parameters of the three different bodies for ranking and for identifying the amount of work which has been done in research and in patents, that all is similar almost in all the three, and it is comprehensive. So that is the only parameter, only criteria wherein more modification and changes will not be required. Rest, graduation outcome also. There are originally, if you see in the graduation outcome, can you change to the directly graduation outcome? You can go to the third parameter. Previous ho jayega. So graduation outcome almost, and outreach. So these are the criteria which I was showing, that research and profession, what is being included, which I told that you have publications, patents, publications in the Scopus, UGC, CARE journal, listed journal, Web of Science. Most of the parameters remains the same, and there is actually no requirement for more modification for this parameter. But graduation outcome, now your outcome, national education policy is outcome based education. So now whatever is the expected outcome, and now in the present situation or without implementation of NEP, what was the outcome, that completely differs. So there will be a major change in the way your outcome will be, your graduation outcome will be ranked, and the parameters which are included, sub-parameters which are included in this graduation outcome, that also needs to be revisited. Almost all the parameters needs to be revisited. And I think, next slide, I think with this outreach and inclusion also, some parameters remains the same, but more or less not much change will be required. So 3 to 4 parameters you need to completely revise and add additional parameters for improving and for enhancing that all the institutions are, first of all, integrate all the three
NBA, NAAC and NIRF, integrate all the parameters, and that will actually give you the proper rating or ranking of an institution. The last one now. That is the last slide, sir. This must be the last, yeah. And the last one which I said, perception, that also we need to include in addition to peer perception, you need to include the student perception as well. So here too many parameters, sub-parameters need to be added while you're preparing the list of the criteria on the basis of which you are going to rank the institutions post implementation of new education policy. So I think this is what I need to convey about how the changes in the parameter becomes more important when your entire change, the entire education ecosystem is going to witness a sea change in your educational institutions. So thank you very much to all the team of the Dnyanasadhana College for giving the opportunity, and thank you very much for the patience. For your insights on the topic. And the second speaker is Professor Mandar Bhanushe. He has an MSc and an MPhil from the University of Mumbai. He's the head Faculty of Science and Technology Institute of Distance and Open Learning, Mumbai. And he's the founder, chairperson, Raising a Mathematician Foundation, an NGO. He has trained 60, sir, thoda, just please. You can leave it. Sir, you deserve it. He has trained 16,000 plus teachers on various e-learning tools and technology through workshops and online webinars, and delivered 38 talks and workshops in various sessions on NEP 2020. And he's regularly conducted workshops through his RAM Foundation for NET, SET, UPSC and MPSC candidates. He is a public speaker and has delivered more than 140 lectures on career counseling, role of youth in national reconstruction, and is also receiver of the National Talent Search Award 2017-18, awarded by the Indian Accounting Association. He is a receiver of the National Award for Best Education Webinar Series, and he has published 5 articles and presented 8 papers at various international and national conferences. Mumbai University has felicitated him with a special award in recognition of training of more than 15,000 teachers on e-learning tools during the COVID pandemic. He has also worked as a resource person with the IIT Bombay on a project of Maharashtra State to train 8,000 high school mathematics teachers under RM's SA. He has successfully conducted 3 cycles of his online 4-credit courses on the UGC Swayam portal in the subjects of mathematics. Means a lot for somebody from the humanities, sir. He is also the Swayam member of University of Mumbai Teachers and has created 54 modules of 4-quadrant e-content in mathematics. And Professor Mandar Bhanushe is also currently leading the newly established Center for Excellence in E-Content Development in the University of Mumbai. He has also been recently appointed as the coordinator of the University of Mumbai's Community Must Radio. It's a privilege to have you here, sir. The stage is all yours. Thank you. Okay, so a warm welcome to all of you. You have been listening to so many speakers from morning. Dr. Kinnary and myself decided that we will not take much time because there is one more session planned after this, and all of you I can see are waiting from morning 9 o'clock. I have been assigned to speak with you related to national education policy, national credit framework, and both of these connected together with a very buzzword in today's implementation of NEP, which is Indian Knowledge System, IKS. So if you read, as Principal Shobha was saying, if you read the NEP document, the basic foundation of National Education Policy 2020 document is nothing but the ancient Indian knowledge, its heritage, and its legacy, which we all have to take forward. That is the foundation of NEP. If you read the vision document and the mission which is mentioned in the NEP 2020 67 pages document, it has a very nice phrase, and it says that what is the aim of this NEP 2020? The aim is to make India a knowledge superpower. We don't want to become a superpower which is going to govern different countries, but we want to take care of the knowledge domain of this entire world. And that is what India, Bharat, has been doing for thousands of years. Somewhere that has been broken and we need to just join the links.
हम सब जानते हैं कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और विगत कुछ शताब्दियों से भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने जो आक्रमण किए उसके कारणवश हमारे देश में आज भी, और आज के इस दिन भर के अनेक सत्रों में भी, एक सत्र में मैंने एक वक्ता से जो प्रश्न सुना वो सुनकर भी लगा कि हमारे मन में वो औपनिवेशिक मानसिकता, द colonial mindset is still there in our mind. It is because basically of the foreign invasions which we had for a long time, at least for 10 centuries we had that kind of problem. तो हमको, मैं हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करनी है और मुझे बार बार अंग्रेजी का इस्तेमाल उसके लिए नहीं करना है। तो हमने ये समझना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो शिक्षा पद्धति थी उसको पूरी की पूरी उखाड़ कर अपनी पद्धति लाने के पीछे का कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर शासन करना था। आप अगर महात्मा गांधी जी के शिष्य धर्मपाल जी का पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने जब भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर अपनी शिक्षा व्यवस्था लानी थी तो उन्होंने भारत के कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के पश्चात जो गैजेट डॉक्यूमेंट्स आज भी लंदन में उपलब्ध है उसको गांधी जी के शिष्य धर्मपाल जी ने पढ़कर उन्होंने एक पुस्तिका लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। हम में से यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी ये वो पुस्तक बताती है विद द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट बुक। इस देश में ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, तत्वज्ञान, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, ये सारी की सारी जो बातें हैं, जीवन जीने का आदर्श जीवन मूल्य, हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पढ़ाना है, मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाना है, एथिक्स पढ़ाना है, हमारी पीढ़ियों के मन मस्तिष्क में से निकाल कर मैकॉले जिसने 1835 में ये शिक्षा पद्धति लाई वो अपनी उस भाषण में कहता है कि किस प्रकार की पीढ़ी हमको भारत में निर्माण करनी है जो त्वचा के रंग से और रक्त से भारतीय होगी लेकिन मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आदर्श, प्रतिमान, इन सारे मामलों में वो अंग्रेज बनेगी। ऐसी पीढ़ी हमको निर्माण करनी है। दुर्भाग्यवश भारत ने स्वतंत्रता के बाद भी 75 वर्षों तक अंग्रेजों की ही शिक्षा पद्धति को अब तक वैसे के वैसे रखा, ऊपर का ढांचा वही रहा, ऊपर से सब बदल होते गए। ये सौभाग्य है कि जो 2020 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसने बहुत सारे बदलाव और मूलभूत बदलाव को हमको करने के लिए कहा है। भारत की जो पहचान है वो हमेशा एक ज्ञान भूमि की तरह रही है। हमारे यहाँ पर ज्ञान की परंपरा जड़वादी नहीं थी, वो प्रवाहमान रही है। इट वॉज नॉट मटीरियलिस्टिक। और इसी कारणवश यहाँ पर कभी अर्थ इन इन्वर्टेड कॉमर्स, पैसे का यहाँ पर कभी इतना वजन नहीं था। तो धर्म के आधार पर सब चलता था एंड धर्म इज नॉट रिलीजन, इसको भी हमने समझना पड़ेगा। हमारे सामान्य बातचीत करने में जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आई है जिसका कुछ उल्लेख इसके पहले की भी एक सत्र में आया, वो हमारे इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से आया। हम बहुत सहजता से बोलते हैं टाइम इज मनी, लेकिन इस बोलने से हम टाइम का महत्व बताने की जगह पर यह बताते हैं कि मनी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम इज मनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए टाइम बचाओ। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ पर वेल्थ इंपॉर्टेंट है, हम हेल्थ को वेल्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो देख रही है जिस पश्चिमी मानसिकता को लेकर हमने ये शिक्षा पद्धति में इतना इसमें नैरेटिव में डाल दिया है कि हम बोलते बोलते भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। कुछ दिन पहले आषाढ़ मास के प्रारंभ में लोगों को कालिदास की याद आती है, लेकिन कालिदास के बारे में कहते हैं कालिदास इज इंडियन शेक्सपियर। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड उनको पता है कालिदास का जन्म कब हुआ और शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, लेकिन तुलना करते हैं कालिदास इन इंडियन शेक्सपियर। मैं 2 दिन पहले भोपाल में था। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, वहाँ पर एक चित्र देखा। चित्र में आसाम स्टेट में माजुली नाम का एक आइलैंड है, उसका वर्णन किया था और उस चित्र के नीचे लिखा था माजुली इज द वैटिकन ऑफ वैष्णवाइट्स। अगेन यू कंपेयर कि वैटिकन क्यों लिखा गया माजुली को, इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं है, लेकिन एक मानसिकता हमारी बन गई है कि हम सब कुछ जो वेस्टर्न है उससे हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, जबकि वास्तव में हमारे परंपरा में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका हमको अभिमान रखना चाहिए।
हमारे यहाँ पर कहा गया है नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में इत्यते, ज्ञान के सिवा इस दुनिया में देश में कुछ भी पवित्र नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। और विद्या अधिक लेने के पश्चात व्यक्ति अधिक विनम्र होता है, इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा है विद्या विनयेन शोभते। लेकिन वास्तव में हम क्या देखते हैं, जितनी ज़्यादा विद्या आज के लैंग्वेज में, जितनी ज़्यादा पीएचडी स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा अहंकार, एरोगेंस दिखने लग जाता है। ऐसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि मूल भूल गए हैं। तो भारत का ज्ञान किसमें था जो हमारी शिक्षा पद्धति में से बिल्कुल निकाल दिया गया? भारत का ज्ञान था वेदों में। वेदों के 6 वेदांग है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, 4 उपवेद है, दर्शन है, इतिहास है, रामायण है, महाभारत है। मैं लिस्ट करते जाऊंगा तो मुझे 1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं लिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो इस मेरे आज के इस वक्तव्य का हेतु नहीं है। मेरा कहने का मुद्दा यह है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान व्यवस्था और भारतीय ज्ञान परंपरा, ये हमारी शिक्षा पद्धति का अंग क्यों बने? इसीलिए बने क्योंकि हमारा जो सारा ज्ञान का भंडार था वो उसी में था। अब इसमें हमको क्या क्या था? तो 64 कलाएं थी, ऐसे बोलते हैं 64 कलाएं, 14 विद्याएं। अब वो कहाँ गई 64 कलाएं? किसी को पूछेंगे कि आप 64 कलाओं का नाम बताइए, जिसमें से खेल भी एक कला है। नीलेश कुलकर्णी जी बैठे, उनका सत्र होने वाला है मेरे पश्चात। तो कहाँ गए भारतीय खेल की सारी व्यवस्थाएं? सब गायब हो गया है। हमारे सिस्टम में से जो भारतीय था उसको निकालकर हम केवल पश्चिम का अनुकरण करने के लिए इस शिक्षा व्यवस्था को 75 वर्षों से चला रहे हैं। अभी इसको बदलने की आवश्यकता है। तो क्या करना है? एकदम क्विक में और शॉर्ट में मैं 2 बातें आपको बताने वाला हूं। व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट वी एज एन इंस्टीट्यूट कैन डू। सो व्हेन आई से व्हाट आई एज अ टीचर, एज ए इंडिविजुअल टीचर, व्हाट कैन आई डू? वैसे तो मेरा इस टीचर शब्द पे भी आक्षेप है, इंग्लिश भाषा पे ही है, लेकिन टीचर शब्द पे विशेष रूप से, क्योंकि भाषा उसकी संस्कृति लेके आती है। हम में से यहाँ इस सभागार में बैठे हुए जो भारतीय भाषाएं जानते हैं, मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, आप कोई भी भारतीय भाषा लीजिए, वहां पर पढ़ने के बारे में और पढ़ाने के बारे में एक ही मूल शब्द है, लर्निंग इज द रूट। आज एक वक्ता बता रहे थे लर्निंग इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। भारतीय भाषा में रूट वर्ड है लर्निंग, मराठीमध्ये आहे शिकणे, आणि शिकविणे त्याचा वरचा शब्द है, इट इज अ क्रिया। शिकणे, शिकविणे, पढ़ना, पढ़ाना। इंग्लिश में है टीचिंग एंड लर्निंग। तो हमको लगता है टीचिंग इज सेपरेट, लर्निंग इज सेपरेट। तो अच्छा हो गया आज एक वक्ता ने बता दिया कि नहीं भाई, हमको लर्निंग ही करना है सबको। तो ये भारतीय भाषा है, उसकी संस्कृति उससे जुड़ी है, पढ़ना ही सबसे मूलभूत कार्य है। तो शिक्षक को भी आजीवन पढ़ना ही है, ये हमको ध्यान में रखना है। खैर, तो क्या करना चाहिए शिक्षक इस नाते? 5 चीजें मैंने आपके सामने यहां पर लिस्ट डाउन की है, जो हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर कर सकता है इंडियन नॉलेज सिस्टम को सिलेबस में लाने के लिए। एक है प्रिजर्वेशन। क्या हमारी जो भारतीय संस्कृति में, हमारी ज्ञान परंपरा में जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स है? 3 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर लाइंग अनरेड। भांडारकर इंस्टीट्यूट का यहाँ पर उल्लेख हो गया। ऐसे सैकड़ों हजारों इंस्टीट्यूट्स और व्यक्ति है जिनके पास में कुछ ना कुछ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हैं। 3 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर लाइंग अनरेड। उसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। दूसरा कार्य कर सकते हैं संशोधन, रिसर्च। हमको सबको रिसर्च करना है, तो क्या हमारे विषय में जो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित होगा उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं क्या? तो हमारे रिसर्च के टॉपिक में कुछ अपना उसमें IKS का विषय जोड़ के, इंडियन नॉलेज से रिलेटेड कुछ जोड़ के कर सकते हैं क्या? तीसरी बात, कोलैबोरेशंस। आज के जमाने में कोलैबोरेशन इज द की वर्ड। तो सब कुछ कोलैबोरेट करके करना है, तो 2-3 शिक्षक साथ में आए, एक शिक्षक किसी इंस्टीट्यूट के, संस्था के साथ में गए, ऐसे कोलैबोरेशन करके क्या हम हमारे भारतीय ज्ञान व्यवस्था और ज्ञान परंपरा के विषयों में कुछ अच्छा जोड़ सकते हैं क्या? कॉन्टेम्पररी जोड़ सकते हैं क्या? चौथा काम कर सकते हैं जो सबको आगे चलकर करना ही है, बिकॉज आज ऑटोनॉमस कॉलेज को कहा है, फिर एम्पावर्ड ऑटोनॉमस कॉलेज, फिर सब कॉलेज को एक दिन ऑटोनॉमस होना है। एवरी कॉलेज प्रोफेसर कैन डू इज डिजाइन एंड डेवलप कोर्सेज रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट्स एंड IKS। आज इसकी बहुत डिमांड है, क्यों है वो भी मैं आगे जो यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहिए ऐसे उस विषय में बताऊंगा। और 5वां मुद्दा है जो हम में से हर एक जन कर सकता है, जो मुझे समझ में आया वो दूसरे को बताना। ट्रेन अवर टीचर कलीग्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों को, जब मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये 4 महीने में कम से कम 40 कॉलेज में मैं गया था NEP के बारे में बात करने के लिए। आज एक बहुत बड़ा गैप है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और वो बहुत स्वाभाविक भी है कि ये NEP में लिखा क्या है हमने पढ़ा नहीं है,
और जो पढ़ा है वो समझा नहीं है, जो समझा है वो सर्कुलर में आता नहीं है, जीआर में आता नहीं है। तो बेसिकली अच्छी बात होगी कि हम स्वयं इस बात के बारे में जानें और अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। ये 5 चीजें हम व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं। एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन ऑटोनॉमस कॉलेज, इवन इफ यू आर नॉन ऑटोनॉमस, टुमारो यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, और एज अ यूनिवर्सिटी और एज एन इंस्टीट्यूट, व्हाट वी कैन डू 4 थिंग्स एज एन इंस्टीट्यूट और एज अ कलेक्टिव टीम ऑफ पीपल। तो एक उसमें कर सकते हैं कि वी शुड पुट ड्यू एफर्ट टू प्रमोट एंड नर्चर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन ऑल डिसिप्लिन्स। इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो इनकॉर्पोरेशन करना है, हमको जोड़ना है, इट इज एट ऑल लेवल्स फ्रॉम स्कूल टू पीजी लेवल एंड इट इज इन ऑल सब्जेक्ट्स, देयर इज नो एक्सक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट। आज किसी सोशियोलॉजी को प्रोफेसर को पूछेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो नहीं बता पाएगा कि 10 नाम बताओ जो भारतीय मूल के हैं, भारत में जन्मे, भारत में उन्होंने इस विषय पर कंट्रीब्यूट किया, नहीं बता पाएंगे। तो जानना चाहिए। इसके लिए ड्यू एफर्ट्स टू बी मेड टू प्रमोट एंड नर्चर यूजी पीजी लेवल माइक्रो क्रेडिट कोर्सेज इन ऑल डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू IKS। दूसरी बात जो यूजीसी के गाइडलाइंस में लिखी है, जिसको हम बिल्कुल कर सकते हैं, 5% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स कैन बी टेकन बाय अ लर्नर इन द फील्ड ऑफ IKS, which can be also from his major courses, or you can have it put in minor, you can put in open electives, whichever bracket you want to put it, but 5% credits is what UGC guidelines is mentioning, both at the UG and PG level. The third thing we can do is, क्योंकि इसको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में स्वामी ये समर्थ रामदास होके गए और उन्होंने मनाचे श्लोक करके लिखा है और बहुत कुछ लिखा है। उसमें एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि सांगे वडिलांची कीर्ति तो एकची मूर्ख। अब ये उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे। ये कहने में हमको कभी कभी लगता है यही हमारा जीवन है, लेकिन इस एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर, एक एक्सट्रीम क्या है जो केवल अपने पूर्वजों को याद करता है, और दूसरा एक्सट्रीम है जो बोलता है वो सब क्या है, पुरानी बातें छोड़ दो, उसको क्या करना है, देयर इज नो यूज ऑफ नोइंग ऑल दिस थिंग्स, इसको फेंक डालो, इसको कुछ नहीं इसका मतलब। जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको फेंकने का हमको क्यों आग्रह कर रहे हैं? तो पहले पढ़े जाने, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। तो दीज आर द 2 एक्सट्रीम्स एज फार एज द इंडियन नॉलेज सिस्टम गोज, एंड वी हैव टू ब्रिज अ गैप बिटवीन दीज, एंड देयरफॉर द थर्ड पॉइंट इज टू फोकस ऑन द प्राइमरी एंड ऑथेंटिक सोर्सेज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पे ना विश्वास करें। एंड द लास्ट 4th पॉइंट, वी हैव संस्कृत डिपार्टमेंट, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी। ये सारे विषयों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट जो भारत में निर्मित हुआ किसी काल में वो मिलेगा। इन सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को सबसे पहले तो इसमें उतरना चाहिए, और जो बाकी के डिसिप्लिन है, बाकी के सब्जेक्ट्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ज्ञान के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में हमारे बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट हमको मिल सकता है क्या, इसका थोड़ा सा हमको पहले इसके ऊपर संशोधन करना पड़ेगा। सो डोंट आउटराइटली रिजेक्ट, एंड देयरफॉर इट इज ओनली 5% क्रेडिट्स। तो अगर एक सेमिस्टर 1 और 2 कंबाइन करते तो 40 का 5% होता है 2 क्रेडिट, एंड देयरफॉर वी शुड थिंक अबाउट माइक्रो क्रेडिट कोर्सेज रिलेटेड टू IKS। इस विषय में आपको और अधिक कुछ जानकारी और मदद लगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Professor Bhanushe sir, for your insights on the topic. I request Professor Bhanushe and Dr. Thakkar to please take the auditorium, seats in the auditorium. And the next speaker for this session is going to join us online. Is he here? He's online? Yeah. Mr. Abhishek is a development professional from Ranchi, Jharkhand, has worked on several government flagship projects. These include the Education Department, Vocational, Delhi, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Livelihoods Mission, and Skill Development. He holds a postgraduate degree in social work from the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and is a student for the SOAS London 2023. He is currently leading the Planning and Monitoring Unit Vocational Branch, Delhi,
and is interested in welfare policy and planning, policy implementation, and sustainable inclusive development. Thank you so much, sir, Abhishek sir, for joining us. Over to you, sir. Hello. Am I audible? Yeah. So, good evening. So, the topic that was given to me was exploring opportunities for research funding, collaboration, incubation ideas, along with the skill-based courses, value education, and vocational courses. So, let me start with giving you a brief details about the whole Indian ecosystem of skilling. And then simultaneously, I will move into different countries where how skill education have been perceived and what are the funding patterns. So let me start with the statement that if India plans to achieve 5 trillion economy, what needs to be done? So the answer is very easy, or I would say the answer is very crucial, where the whole housing, or I would say each and every household of India has to convert itself into micro, small, and medium enterprises. So this has been the case of China. This has been the case or the development story of Japan, where each and every household is manufacturing or contributing to the industry or production in one way or other. So India stands at a very crucial juncture where the youth population of India is almost, I would say, it is the highest among the world. So we have an immense opportunity at hand where we have huge number of youth who are ready to be skilled. Here we have a youth population who can cater to the world labor forces and contribute in the production. So to elaborate more on this, I would say that currently the GDP of India, it is, sorry. Okay. So currently the GDP of India is basically largely not contributed by Tatas or Ambanis or some big giants that we know of, but it is contributed largely by the MSME. So when we are talking about skill development, we need to keep this in mind that Indian economy is largely contributed by our MSMEs, the grocery shops around the corner, the food joints that we eat around the nooks and corners. So let me take you back to the classical economics where we talk about land, labor, and capital. So with the coming up of technology, the requirement of land is now almost obsolete because coming up of the platforms like Zomato, Swiggy, Flipkarts, the business could be a one single room house of any person from where we can start the whole business itself, or we can start the production and economics. The economics start from the household itself. But the capital remains crucial. From where do we get the capital, or how we are going to mobilize the capital? So the easy and obvious answer could be one, there is no way out that government has to fund the skill ecosystem. But apart from it, the industry and the collaboration from industry could be the second option. With the recent change in the CSR guidelines, which talks about that they can contribute in research with the higher, with the Institute of Eminence like IITs and IIMs, it's a welcome step in the CSR law, where we can think of some sort of collaboration and funding regarding the skill ecosystem. And finally, what I can think of now is NGOs or the foundations, such as Reliance Foundation is one of them. Adani has its own foundation. Cavallia Group has its own foundation. And there are n number of foundations, Dr. Reddy, and you name it, and that industry has its enterprise, its foundation. So this could be one of the way where we can seek for funding. I will come back to this. But before this, I want to just ask something, or I would just like to know, so far, is there any question about it, or
if you have some query, or should I go ahead with this? Hello. Okay. So let me talk about something about the different countries and how they look into the vocational system of it. First is Germany. So why I am taking Germany as an example is because we need to understand the backdrop of Indian economy or Indian industry, or where our skill forces are going to be. So one, there is a lot of effort into climate change, and Germany has been pioneer in providing green jobs and green skilling and green ecosystem. So everything has green to it, and we are talking about importance of renewable energies, and our workforce is going towards it. So Germany has dual funding system into it. One, the industries are mandated by law to adopt to have apprenticeships in their industries. Second, the government provides tax exemption to them. If industry takes n number of and they have, if they have 100 employees, so they have mandated that there are n number of people whom they have to take as an apprenticeship, and it is the mandate that is given by the law, and in return government provides tax exemption. Second is, what does the state provides? The state provides financial training programs, research projects, content material, and infrastructure such as large labs that would be required to skill our